So in the today's lecture we are going to discuss the Brillouin zones. So in the yesterday lecture in the Kronig-Penney model we have discussed about your allowed energy level and the forbidden energy level. We have this figure yesterday we have introduced from here. These are your forbidden, these are allowed energy level, and from here to here this is the first Brillouin zone, and from here to here this is second Brillouin zone, and we are plotting this in your k space because this is your k space and the k is having the value, that is general value for k here is plus is equal to plus minus n pi upon a. So therefore the Brillouin zone क्या होते हैं? Brillouin zone are nothing but the allowed energy levels. These are the allowed energy regions or levels in your periodic potential. और इसको हम Brillouin zone को वैसे बोलते हैं कि Brillouin zone are nothing but the Wigner seed cell in your reciprocal lattice और reciprocal space. और इसको बिल्कुल सिंपली डिफाइन करना हो तो these are nothing but the particular choice of unit cell in your reciprocal lattice. तो अब Kronig-Penney के केस में अगर बैंड थ्योरी के केस में अगर इसकी बात करें तो these are nothing but the allowed energy regions in the momentum space for electrons which are present in your periodic crystals. और जो इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में होते हैं, पीरियोडिक क्रिस्टल में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स और या ब्लॉक वेव्स. So in the Kronig-Penney model, the in one-dimensional lattice, the energy discontinuities occur when the wave, your electrons or wave, these block waves satisfies the relation, that is k plus minus n pi अपॉन ए. ये कंडीशन हमने कल डिड्यूस की है वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3. सो फर्स्ट के लिए क्या होगा? व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो देयर विल बी फर्स्ट Brillouin जोन, 2 के लिए सेकंड Brillouin जोन, थर्ड के लिए थर्ड Brillouin जोन. सो इफ वी कंसीडर वन डायमेंशनल monatomic lattice, or you can say we consider a line, so that is representing k values. इसको a values को मैं k space को momentum space की बोल रहा हूँ because we know that momentum has the eigen value h cross k. ये होती है. तो ये momentum space मतलब ये तो constant है, Dirac constant है या reduced Planck constant है. so therefore this will be momentum space और k space. इसको momentum space भी बोलते हैं इसलिए. So let us consider a one-dimensional monatomic lattice or a line that is representing k values, which is divided into energy discontinuities. Discontinuities ये हैं, क्या होगा? प्लस माइनस पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 3 पाई बाई ए. सो इधर से हम क्या करेंगे? लाइन कंस्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर दिस इज Brillouin zones are basically your allowed energy regions in your k space or a momentum space. This is for one dimensional. So the quantum number here will be two quantum number, that will be kx, that is in momentum space because one dimensional, kx and s. Two quantum number kx and s. S for spin. स्पिन की क्या होगी यहाँ पे वैल्यू? क्या होगी? स्पिन विल हैव वैल्यू प्लस माइनस हाफ, स्पिन अप और स्पिन डाउन, एंड के एक्स विल बी देयर. क्योंकि ये क्या है? एक ही डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में हो गए तो चार होंगे, के आई भी आ जाएगा, के जेड भी आ जाएगा, एस. एंड if there is one electron moving in your periodic potential, the electron will be known as your block electron or block waves. and एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिकॉज जब उसको फिलअप करते हैं तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस, दे आर स्पिन हाफ इंटीजर स्पिन एंड दे विल फॉलो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. So therefore this Brillouin zone can be constructed differently. एक और स्कीम है इसको कंस्ट्रक्ट करने की. लेट अस डिस्कस दैट स्कीम. सो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली बेसिकली जो हमारा फर्स्ट Brillouin जोन होता है उसको हम रिड्यूस जोन बोलते हैं. इट इज़ सफिशेंट, बट समटाइम्स अगर हमें हायर जोन कंस्ट्रक्ट करने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, एक ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं लेटाइस पॉइंट में, और उसमें मान लिया दिस सेंटर हो तो वहाँ से हम क्या करेंगे? नियर बाय पॉइंट को चूज़ करेंगे, पी क्यू
आर एस। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। भाई सेम प्रोसीजर है जैसे हम क्या करते हैं बिगिनर सीड सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉर्मल अटैक्स में। सो हमने क्या नियर बाय पॉइंट को क्या कर लिया है ओरिजिन के पास, इनको ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे हम ओरिजिन से इन नियर बाय पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, इन पॉइंट पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर से भी इस पे बाइसेक्टर। तो अब मिड पॉइंट पे आ सके बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर ड्रॉ करेंगे और इधर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे हमने ड्रॉ किए तब इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्या कर लेंगे, इनको भी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा एक इनर स्क्वायर बन जाएगा। और अब इस इनर स्क्वायर के अंदर जो भी एरिया है वो कौन सा एरिया है, दैट इज़ नोन एज योर, ये कौन सा जोन है, दैट इज़ नोन एज योर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ये आ गया हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो इस इनर स्क्वायर के अंदर है। और जो अब सेकंड ब्रिलियन जोन इधर से कंस्ट्रक्ट करना हो तो सेकंड ब्रिलियन जोन कौन सा है हमारा, ये दिस इज योर अवर सेकंड ब्रिलियन जोन। ये इनर वाला फर्स्ट ब्रिलियन जोन और ये वाला सेकंड ब्रिलियन जोन। थर्ड वाला कंसीडर करना है हमने तो क्या करेंगे हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। इधर से क्या लेंगे परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर देंगे और इधर से जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो दैट रीजन विल बी योर थर्ड ब्रिलियन जोन। सो दस वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस योर फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो रेड बॉक्स के अंदर है, रेड स्क्वायर के अंदर जो है दैट इज EFGH के अंदर जो है वो है फर्स्ट ब्रिलियन जोन। और EFGH और PQRS के बीच में जो है दैट इज दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन, दिस इज योर थर्ड ब्रिलियन जोन। और इसके बाहर जो है ये वाला ये है हमारा थर्ड ब्रिलियन जोन। सो that's how we have constructed these brilliant zones, higher brilliant zone and lower brilliant zone. So similarly हम क्या कर सकते हैं इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स हायर ब्रिलियंट जोन के लिए भी इसको हम क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस। सो नाउ लेट अस discuss what is the number of possible wave function in your band, that is energy band, that is allowed energy regions. How many wave function can be possible? So now to calculate the number of possible wave function in a band, let us consider a finite crystal of length L. Then the following boundary condition must be satisfied for the periodic potential. You put a periodic crystal, that is psi x plus L is equal to psi x. Here your crystal or your potential having periodicity or your period is equal to L. This is equation number 1. So now since we know that in your periodic function the solutions of the wave functions or the functions are known as your block functions. So the block functions can be given as the block functions are given as psi x is equal to exponential kx into ukx. This have the periodicity L. So now this block function should also follow this periodic boundary condition. So therefore your exponential इसमें पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा के x plus L into UK x plus L. This is given like this. This will be exponential iota kx into UK x. This is question number 2. So now here UKX is periodic, hence we have here UKX is
periodic, that is UKX L plus L is equal to UKX. So therefore, hence we have, that is K is equal to 2 pi n upon L. So this is n pi upon L. Here pi is here 2 pi, that is your potential is periodic. You can say that from Brownian panel, that is periodicity is 2 pi upon A. So with, because here A is periodicity क्या है हमारी L है, therefore this is with n is equal to plus minus 1 plus minus 2 so on. This is question number 3. So hence total number of possible wave functions in the range dk, that is because हम कौन सा स्पेस ले रहे हैं, यहाँ पे k स्पेस ले रहे हैं, माउंटेन स्पेस. So hence total number of possible wave function in your range dk is given as, that is, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dk that is 2 pi upon L into dn, because हमें dn चाहिए, number of possible wave function. So dn क्या आ जाएगा यहाँ से, dn will be L into dk upon 2 pi. So therefore this is question number 4. These are the number of possible wave function in the range dk. Now we know that the k has the values ranging from plus minus n pi by a. So for first Brillouin zone के लिए क्या होगी, minus pi by a to pi by a. So therefore where a is the length of unit cell in your crystal lattice, so thus the total number of possible states in the band is given as, total क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 4 को. So therefore this will be n इंटीग्रेशन dn, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये L अपॉन 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट आ गया, तो इंटीग्रेशन कहाँ होगी, माइनस पाई बाई a टू पाई बाई a फर्स्ट Brillouin जोन के लिए इंटू dk. सो अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके इसको क्या आएगा, 2 पाई a, तो इसको पुट कर देंगे तो ये आएगी वैल्यू पाई बाई a माइनस इंटू माइनस पाई बाई a, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दिस पाई बाई a. सो दिस विल बी L अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन a. So this will be cancelled, so this will be L upon a. So number of possible states will be n into L by a. So इसको हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, therefore n is equal to L. So if there are capital N unit cell in the length of the crystal, so we get capital Na into L. So we have, so thus we can say that the total number of possible wave function in your this in energy, in any energy band is equal to the total number of unit cell. This is total number of unit cell. So thus taking into the account of Pauli exclusion principle and electron spin, जैसे मैंने बोला क्वांटम नंबर क्या होंगे वहाँ पे k और s. So thus we can say that band can occupy the 2n electron. तो ये एक उसके लिए, जब स्पिन आएगी तो वहाँ क्या होगा, स्पिन अप भी होंगे, स्पिन डाउन भी होंगे, तो क्या आएगा, दिस विल इनटू 2n, ये n क्या हो जाएगा तुम्हारा 2n हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, स्पिन अप और स्पिन डाउन. So now we will calculate the velocity of electron. So now we know that electron has both, it is a quantum mechanical particle, so it has both a dual nature, that is having wave nature and particle nature. So according to the de Broglie theory, the velocity of electron with wave vector k
is same as the group velocity of wave representing the electron, because इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक टाइम पे वेव की तरह बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा. सो इट हैज़ वेव पार्टिकल duality. So therefore its velocity is same as a wave having the your wave vector k. So therefore it is same as, its velocity is same as the group velocity, that is d omega upon dk. So this is the formula for group velocity. bg से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ से हम सिर्फ v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6. So and here omega is the angular frequency and it is related to their electron energy, because frequency में एनर्जी के साथ रिलेट करती है by your Planck's law. So omega, since we know that from Planck's law, E is equal to h nu. सिंपल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखना होता है, हम क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लायर डिवाइड करेंगे 2 पाई से. सॉरी एच म्यू है, एच क्रॉस नहीं, एच म्यू है. तो एच म्यू अपॉन 2 पाई हो जाएगा एच क्रॉस, एंड न्यू इंटू 2 पाई विल बी ओमेगा. दिस विल बी एच क्रॉस ओमेगा. दिस इज फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, फ्रॉम प्लैंक्स लॉ. सो इधर से हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर योर ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस. So therefore this is the relation between energy and your angular frequency. So in terms of energy इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को. So in terms of energy, the velocity group velocity can be written as b will be 1 upon h cross. So this will be dE upon dk. That is, energy is differentiated by your wave vector. So for free electron, so since we know that for free electron, इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं, कोई फोर्स नहीं है, so its energy will be in terms of kinetic energy, that is p square upon 2m. P is equal to h cross, so it will be h cross square k square upon 2m. काइनेटिक एनर्जी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे k से, so dE upon dk, this will be 2 h cross square k upon 2m. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, so this will be h cross square k upon m. So ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, पुटिंग क्वेश्चन नंबर 8 into क्वेश्चन नंबर 7, that is b is equal to 1 upon h cross into d upon dk, that is nothing but h cross square into k upon m. So h cross से h cross, this will be h cross k upon m. Since we know that what is h cross k, this is the eigenvalue of this momentum rotor, or momentum eigenvalue. This is p upon m. Here p is equal to h cross k. Therefore this is nothing, question number 9. So अब हमने क्या किया, ई एनर्जी और वेलोसिटी को हमने दिस और के के साथ क्या किया, हमने प्लॉट किया. दैट इज दिस रिप्रेजेंट, ए रिप्रेजेंट्स योर ई वर्सेस के, एंड हियर दिस बी रिप्रेजेंट्स, बी फिगर रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी वर्सेस के, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस वेव वेक्टर, एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर. So from this equation, this is the behavior of velocity. So that's velocity is maximum at increasing till your inflection point, that is k is equal to k naught, and after that it is decreasing, and in this is having your quadratic nature. So here e
E we know that E क्या है हमारा h cross square k square upon 2m. So it is increasing quadratically. This is like a parabola. फिगर ठीक से नहीं बनी है थोड़ी सी, तो क्या it is kind of a parabola. So this is quadratic. This is the behavior of E and energy and velocity versus wave vector. So you can say that beyond this point, यहाँ पे भी और यहाँ पे, this is beyond this inflection point cannot, your velocity decreases and energy increases. You can say that.